ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ অলিম্পিয়াডত অসমৰ হৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে সোণাৰীৰ খুচি কুমাৰীয়ে। সোণাৰীৰ খুচি কুমাৰীক উষ্ম আদৰণি চৰাইদেউবাসীৰ। কেৰালাৰ কন্যাকুমাৰীত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিয়াডত অসমৰ হৈ সুনাম অৰ্জন কৰা খুচি কুমাৰীক সোণাৰীত উষ্ম আদৰণি জনালে চৰাইদেউবাসীয়ে। সোণাৰী হিন্দী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী খুচি কুমাৰী। উল্লেখযোগ্য যে তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীত 15 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ অলিম্পিয়াডত অসমৰ হৈ মুঠ 16 গৰাকীকৈ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভিতৰত অসমৰ হৈ 2 গৰাকীৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিয়াডত অসমৰ ভিতৰতে চৰাইদেউ জিলাৰ 2 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে সুনাম অৰ্জন কৰিছে। সোণাৰীৰ খুচি কুমাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিয়াডত 3য় স্থান দখলেৰে ৰাজ্যৰ লগতে চৰাইদেউ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। नमस्ते, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। सोनारी हिंदी एमई स्कूल की छात्र हूँ। मैं अभी नेशनल ओलंपियाड 225 में गई थी खेलने असम से। टोटल 16 पार्टिसिपेट गए थे, उसमें से हम 2 असम के निकले हैं। पहली मैं खुशी कुमारी और सेकंड बॉर्निल हजारिका जो सराईदेव के ही है, और हम दोनों ही सराईदेव के हैं। तो क्या पोजीशन मिला है? मुझे 3rd पोजीशन मिला है। ब्रॉन्ज का है, एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है और मेडल है। सबको ये संभालना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, और सारे टीचर्स ने भी मुझे हिंदी स्कूल के बहुत सारे ये दिए, और उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। बल्कि मैं यही बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी, मेहनत करूँगी और नेक्स्ट बार गोल्ड मेडल लाने के लिए कोशिश करूँगी। मथुरापुৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।